Namaskar. Welcome to Pristine IAS. I have a good news for you. To know what is the good news, just stay with us. We will tell you what is the good news. So this is GS paper 1 2024 last part. आज जहाँ भी चार्टा पांचटा क्वेश्चन अच्छी with this we will cover the GS 1 of 2024. 2024 सरला परे we will move to 2023 and 2022. So जेहेतु आम GS 1 कवर कर फास्ट आम GS 1 ही कंप्लीट करदे 2024 23 22 देन आम GS 2 को जीवा तापर GS 3 को आसीबा एंड फाइनली वी विल मूव टू GS 4. सो दिस विल बी अ स्ट्रक्चर. GS 1 जेहेतु टिके अधिक पार्ट हो गला इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम. एबेठू आमे GS जति भी रहिला 2023 22 आउ जति भी नेक्स्ट GS 2 हो गला 3 4 आको हमें टिके लॉन्ग वीडियो होबो बट हमें शॉर्ट रे माने लॉन्ग वीडियो बट तीनटा चारटा पार्ट रे हमें ताको कवर कर दबा. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन. Yes, I have the good news. I will tell you after some time. Just stay with us. First question is discuss briefly the archaeological survey of India. देखो एटा हला पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर रु से माने जेहेतु से पचारि परथांते गुप्ता एम्पायर रो पचारि परथांते मुगल रो पचारि परथांते साउथ इंडियन रो चोला एम्पायर रो पचारि परथांते बट दे choose to ask question directly from archaeological survey of India. This is a institution but the good thing is here यदि तुमको चोला एम्पायर विषय पचरा था तुम चोला एम्पायर रो कल्चर पढ़ीना कि टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ीना तले करि पार नथांत. चोला हो कि साउथ इंडियन हो किंबा गुप्ता पचारथिले भी तुम करि पार नथांत. यदि न पढ़िथिबो पढ़िथिले तो ऑब्वियसली करि परिबो. यदि मुगल पचारिबे सेम थिंग बट हियर दे आस्क्ड ASI एंड ASI आमे एमिति हो कि आमे सब जिंस जान नथिबे बट जति आमे प्रीलिम्स से पढ़िचंदी जति आमे ASI भीतर विषय रे जानिचन सेति रे आंसर टा हे जिवो. फाइन. सो देखो the ASI was founded by Alexander Cunningham in 1861. It is works under the Ministry of Culture. एटा तो आमे पढ़िथिले ना ASI के स्टार्ट करथिले that is Alexander Cunningham. Year हला 1861. Works under the Ministry of Culture. It is the premier organization for archaeological research and protection of India's tangible cultural heritage. आमे tangible heritage और intangible heritage already cover कर सकचंदी. Right? तार roles और functions. First role है conservation and maintenance. Second है exploration and excavation. जेंति ओडिसा रो शिशुपाल गोडरे भी एबे एक्सकावेशन चलछि ना राखीगढ़ी हरियाणा रो सेठी भी एक्सकावेशन चलछि. तो न्यू तो नुवा जिंस फाइंड करिवे देन दे विल डू रिसर्च एंड फाइंड आउट कि एबे को टाइम रे थिला ठीक अछि एठी को प्रकार सभ्यता थिला एवरीथिंग दे विल ट्राई टू फाइंड आउट. ताबला लीगल रेगुलेशन जेते सब एंशिएंट मॉन्यूमेंट वगैरह अछि तारो रेगुलेशन पई ASI is responsible. Then epigraphy and research. Epigraphy means ancient inscription हे गला script हे गला coins हे गला translating and सेगुडा को ट्रांसलेट करिया जे ताळपत्र रे अछि जिंसटा ठीक ताको हम ट्रांसलेट करी अलग जगह रखिया पड़ियो नल तो सेटा खराब हे जिवो. And also providing research. Then museum management. केतरा museum that is works under the guidance of ASI. First la conservation and maintenance. The primary responsibility of ASI is the preservation, conservation and environmental development over 3,600 ancient monuments and archaeological sites of national importance. This number
आम जान नथिले बट एति तो आम जानथिले ना कि एएसआई कोन काम करछि प्रिजर्वेशन पे काम करछि कंजर्वेशन एंड जो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट ओवर एंशिएंट मॉन्यूमेंट जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट अछि ताको केमि प्रोटेक्शन करा जिवो ता केमि कंजर्व करा जिवो सच एज ताजमहल कुतुब मीनार अजंता केव्स ओडिसा रे भी तुम दे परियो राइट देन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकैवेशन the ASI systematically conducts archaeological exploration and excavation across the country to unearth hidden historical sites. Then prehistoric tools, ancient civilization. तो एटी तुम एग्जांपल दे परियो गोटे राखी गढ़ी लिखि दो राखी गढ़ी ऑफ हरियाणा एंड शिशुपालगढ़ जोटा हमर भुवनेश्वर अछि राइट देन हला legal regulation. It regulates all archaeological activities and prevents illicit trafficking of antiquities over under the ଗୋଟେ act ଅଛି ancient monument and archaeological sites and remains AMSAR Act 1958 ଦେଖ ଆମର इवन बहुत सारा मंदिर रे बहुत जो माने को जाय पितलर मूर्ति अछंती कोठी ब्रोंज रो अछंती राइट कोठी अष्ट धातु रे तयारी छन माने मूर्ति एंड दिस एंटिक्विटीज तार डिमांड फॉरेन में बहुत अधिक थाए तो एमाने कौन करती ताको ट्राफिक करती माने चोरी करी नहीं कि अलग देश को ताको बिकिबे नहीं कि तो तार रेगुलेशन किए करिवो ए जो इलिसिट ट्राफिकिंग होची तार रेगुलेशन रो दायित्व मध्ये होला एएसआई रो तापई गोटे एक्ट अछि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट आ अंडर रे आउ कोन हो जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स अछि ता केमिति मेंटेनेंस करा दिबो तार भी जेमती कोणार्क टेम्पल हे गला केबे बाली पसुची बाली कोडा होची एवरीथिंग दैट इज अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट तुम कोणार्क सन टेम्पल ना भी लिखि परिबो एंड एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 ए दिटा एक्ट लिखियो फर्स्ट एक्ट तो समझे जानथिबे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट आमसार एक्ट 1958 एटा तो बहुत फेमस आ गोटे एक्ट हमको लिखा था द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरीज एक्ट 1972 तापले एपिग्राफी एंड रिसर्च एएसआई स्पेशलाइज्ड ब्रांच स्टडी एंशिएंट इंस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट कॉइन्स को कौन कहते नुमिस्मेटिक जोटा पुराना इंस्क्रिप्शन अच्छी कोटी पत्थर रे लिखा है जमी खारबेलर इंस्क्रिप्शन अच्छी हाथी गुंबार आम पढ़ी देखुं रानी गुंबार लिखा है स्क्रिप्ट होगला जमीती आमर जो स्क्रिप्ट अच्छी कोटी जो स्क्रिप्टा लिखाई इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ताको एपर्यंत आम पढ़ी पारना कौन लिखाई तो देयर इज रिसर्च देन ट्रांसलेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग देन टू प्रोवाइड एक्यूरेट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आउ किछि किछि जेमती जोटा किछि ओडिसा रे बहुत जिंस तालपत्र लिखाई तालपत्र रखले कोन हो तार सेल लाइफ खत्म होला पर से जिंस ही खत्म हो जिवो तो ताकू फेरे डिजिटाइज करबा कि ताकू अलगा मीडियम रे ताकू रखिवा प्रोटेक्शन करवा दैट इज आल्सो डन अंडर द एएसआई एंड लास्ट इज मैनेजमेंट ऑफ म्यूजियम्स इट एस्टैब्लिश एंड मेंटेन साइट स्पेसिफिक म्यूजियम्स नियर प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल लोकेशंस टू डिस्प्ले एंड सेफगार्ड डिस्कवर्ड एंटिक्विटीज फॉर द पब्लिक बड़ बड़ जोटा मॉन्यूमेंट हेगला ता पाखरे तांगर म्यूजियम्स थाए से म्यूजियम रे कोन थिबो से लोकल एरिया रे जहां भी से प्रिजर्व कर रखिथिबे तांग कल्चर को देखिया पे तांग ट्रेडिशन को देखिया पे से सब जिंस एट थिबो तार भी मैनेजमेंट कम्स अंडर द एएसआई तार भी मैनेजमेंट पे एएसआई रिस्पांसिबल एएसआई एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ इंडियाज पास्ट द एएसआई ब्रिजेस द गैप बिटवीन हिस्टोरी एंड मॉडर्न वर्ल्ड ensuring nations rich architectural and cultural legacy survives for future generation बहुत छोट रे कंक्लूड करा गला बुझि परले कोन कोन फंक्शन थिला फर्स्ट ला कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस सेकंड ला एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकैवेशन लीगल रेगुलेशन एपिग्राफी एंड रिसर्च म्यूजियम मैनेजमेंट सब तो तुम एग्जांपल दे परिबो जेमति मु कहली एत तो एग्जांपल दिया है बाकी जोडी न दिया है सेठी भी हमें एग्जांपल लिखि परिबा यदि हमें क्वेश्चन बुझी परचंती आउ यदि हमें आगुरी बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करचंती यदि हमें आगुरी बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करचंती क्वेश्चन बुझी परचंती ताहले हमें इजीली एग्जाम हॉल रे
आंसर कर दे पळे आसिया बट दैट नीड प्रैक्टिस दैट नीड योर टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज किनी देले होबनी टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करिया पड़ियो आ टेस्ट सीरीज पढ़ी दिया दरकार से भाया क्वेश्चन से पचार दरकार सो दैट कि तुम जिन को एनालाइज करके जीव तुम चिंता करके जीव आउ से भाया किसी क्वेश्चन आसला देन यू कैन मैनेज इट और जदि किसी भी क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आसला तुम पढ़ी ना ताको भी केमती मैनेज करिया पड़ियो दैट आल्सो यू लर्न बाय राइटिंग मॉक जदि मॉक सेमती क्वालिटी अच्छी देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन दैट वे नेक्स्ट क्वेश्चन explicate the nature of regional development in Odisha state. Odisha state रो देखो ये क्वेश्चन टा एक्चुअली कौन पचारची रीजनल डेवलपमेंट और नेचर बट तुम जब ताको क्वेश्चन को बुले देखो ये क्वेश्चन बोधे लास्ट 10 ईयर रे आस चलछ लास्ट 10 ईयर हला ये क्वेश्चन आस चलछ रीजनल डिस्पैरिटी तार ना चेंज करिकी नेचर पचरा है ओके द क्वेश्चन इज सेम सेम माने मु कोन को बुझी परछ तो केमती टेस्ट सीरीज तुमको हेल्प करिवो ये क्वेश्चन आगुरी भी आसची तुम जदि ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज देखी तुम बुझी पारियो कि कोन पचरे चाहूची जेमिति हम प्रीलिम्स रे कोन करतले बहुत सारा जतले मॉक आमे माने मॉक टेस्ट आमे दियंती आमे बुझी पारंती कि आ भीतर ऑप्शन कोटा हबो कोटा हबनी गोटे तुमको एक्सपीरियंस गोटे आसी जाए तुम जानी पारो जिनसटा सिमिलरली मेंस पे भी जदि बहुत सारा तुम मॉक लिखि तुम प्रैक्टिस करथिबो तुम एनालाइज करथिबो एग्जाम हले भी तुम से जिनसटा को रिफ्लेक्ट हबो तुम मे बी से जिनसटा समस्त पे नुआ थिबो बट तुम से लिखि आस करियो एंड दैट इज द थिंग व्हिच विल गिव यू ए रैंक पे से जिनस करिया पड़े सेति पे बहुत सारा मॉक लिखिया पड़े वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट दैट डजंट मैटर तुम लिखो लिखिले ही तुम नुआ नुआ शिखिबो आ जदि भाबियो मु सारी की कोर्स सारी की मु मॉक टेस्ट जॉइन करिवि प्रीलिम्स रिजल्ट आले पर मॉक टेस्ट जॉइन करिवि से चलथिबो सेमती फाइन चलो regional development of Odisha presents a classic paradox a transition from historically lagging economy to a rapidly growing industrial powerhouse yet deeply marked by structural and geographical imbalance understanding the development requires looking closely at the socio-economic forces shaping the state कौन paradox अछि the state of Odisha transitioned from lagging economy state এটা হিস্টোরিক্যালি আমার সেয়া थिला इवन ब्रिटिश पळे भी सेया थिला ब्रिटिश पर भी कंटिन्यू कला recently that transition is changed and it brings a rapidly growing industrial powerhouse but ता सहित ओडिशा रे आज का डेट रे भी वी आर और हम कहि पारे वी आर विटनेसिंग स्ट्रक्चरल एंड ज्योग्राफिकल इंबैलेंस तो ये जो इंबैलेंस अच्छी से जो डेवलपमेंट रु आसी ता ऊपर हमको माने कोन करिया अछि एक्सप्लेन करिया अछि फाइन सो की डायमेंशन कोन फर्स्ट ला कोस्टल एंड इनलैंड डाइकोटोमी सेकंड ला तो केबीके फैक्टर कलाहांडी बलांगीर कोरापुट रिसोर्स ड्रिवन एनक्लेव इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बानाइजेशन एंड आईटी ग्रोथ एग्रीरियन सब्सिडारिटी लास्ट ला टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशन ठीक अछि जिबा हमें देखो फर्स्ट जिनस होला coastal and inland dichotomy the prominent feature is stark contrast between prosperous coastal belt like Kotak hegala Khurda hegala and economically lagging southern and western interior regions देखो western Odisha जेहेतु डेवलपमेंट एस्पेक्ट रे पछर अछि बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स सेति पई वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल क्रिएट करा हैतिला एटा भी सत्य कि वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल जो तुम तैयारी करा हैतिला तार फ्रूटफुल रिजल्ट किछि आसलानी नाउ दे हैव क्रिएटेड ऑलमोस्ट 4 or 5 डेवलपमेंट काउंसिल साउथ रो भी खोला हैछि ईस्ट रो भी खोला हैछि वेस्ट रो खोला हैछि सब पई खोला हैछि बट दिस इज द फैक्ट कि किछि कोस्टल regions mostly coastal region is wealthier than the
इंटेरियर रिजन्स और आम कह सदर्न रिजन होगा जमी कोरापुट वगैरह कि वेस्टर्न रिजन ताठू कोस्टल रिजन टिके वेल्दी अच्छी टिके नहीं ठीक ठाक वेल्दी अच्छी बिकज ये इंडस्ट्रियलाइजेशन अधिक अच्छी ये जो माने एग्रीकल्चर होची तार भी बेटर फैसिलिटी अच्छी फाइन सेकेंड है कौन केपीके फैक्टर कलाहांडी बलांगीर कोरापुट दिस इज a region which historically symbolizes persistent underdevelopment. Persistent underdevelopment. Co region ta KPK. Persistent underdevelopment. Highly tribal concentration, acute poverty, requiring specific or special administrative focus. ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା କଥା ବିକଜ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ରିଜନ୍ସ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ର କାରଣ ହଉ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିକେସନର ବ୍ୟାରିୟର ହଉ କିମ୍ବା ଫଣ୍ଡର ସର୍ଟେଜ ହଉ ଏସବୁ କାରଣରୁ केबीके रीजन इज परसिस्टेंटली अंडर डेवलप्ड जी फोकस हवा कथा हेतिकी फोकस मिल पारानी जी डेवलपमेंट हवा कथा हेतिकी डेवलपमेंट हेटी देयर इज हाई ट्राइबल कंसंट्रेशन ऑब्वियसली से रीजन रे ट्राइबल मानकर पॉपुलेशन बहुत अधिक देयर इज एक्यूट पोवर्टी पोवर्टी रो माने पीपल आर देयर कि किछि लोक अछंती पोवर्टी रो बिल्कुल पाखरे अछंती तांको टिके एफर्ट लगेले से माने पोवर्टी रो बाहर आसी पारे बट एमिति बहुत सारा लोक अछंती जो मानको बहुत अधिक एफर्ट दरकार मे बी 10 ईयर 20 ईयर 25 ईयर सपोर्ट दरकार सो दैट से माने से पोवर्टी को छाड़ी की मेन स्ट्रीम को आसी परिबे किंबा एपीएल हेई परिबे सो एक्यूट पोवर्टी माने जोटी की गरीब रो बहुत अधिक माने जो सीमा रेखा अछि बीपीएल हम जोटा कहउछन्ती बिलो पोवर्टी लाइन तारो बहुत तळे अछन से माने तांको स्पेशल इंटरवेंशन दरकार ओके एंड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस फॉर देम थर्ड है रिसोर्स ड्रिवन एनक्लेव इंडस्ट्रियलाइजेशन while mineral rich district like Jharsuguda, Anugul, Jajpur lead in industrial growth due to coal and iron ore, this development is often localized, creating economic enclaves without uniformly uplifting adjacent rural areas. तुम ये देखो जाजपुर जो तुम एग्जांपल नबो जाजपुर पाखरे केन्द्रापड़ा अछि ठीक तो केन्द्रापड़ा तो किसी इंडस्ट्री ही नहीं जाजपुर रे मिनरल्स मिलुछि कि बट केन्द्रापड़ा रे इंडस्ट्री ही परनी दैट मींस देयर इज द डेवलपमेंट इज लोकलाइज्ड आ तुम देखिबो कलिंगनगर हो जो टाटा स्टील अच्छी कि जाजपुर रोड एरिया हो जी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी फॉर दैट रीजन माने फॉर दैट रीजन से जो कारण पे से रीजन टा ही डेवलप्ड बट तुम जाजपुर इंटीरियर को पळै से किछि माने से डेवलपमेंट रो किछि फायदा ही पहुंचनी देन अर्बनाइजेशन एंड आईटी ग्रोथ लाइक भुवनेश्वर एंड कटक urban development is highly concentrated in specific hubs particularly Bhubaneswar Cuttack corridor, which attract bulk of IT service and higher education investment. बहुत सारा इंजीनियरिंग कॉलेज हेगला प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हेगला दे आर वर्किंग एज और सेमानक पाई जॉब दवा पाई कि ओडिसा रो इकोनॉमी को बूस्ट करिया पाई जो आईटी सेक्टर अछि दैट इज स्पेसिफिकली सिचुएटेड इन द कटक भुवनेश्वर रीजन और से कॉरिडोर रे अछन बिकॉज आईटी जो इंडस्ट्री अच्छी तार भी माने सेमान को भी कौन दरकार तांको भी फास्ट कम्युनिकेशन दरकार दे वांट टू कम माने गोटे रीजन आ गोटे रीजन को कनेक्टिविटी थिबा दरकार एंड जति कि तांको अमेनिटीज वगैरह दरकार दैट इज प्रेजेंट ओनली इन भुवनेश्वर एंड कटक रीजन से कॉरिडोर अच्छी बिकॉज बाकी जगह सेति डेवलपमेंट पर्यंत हेनी देन एग्रेरियन subsidiarity agriculture remains the primary livelihood of majority still regional variation in irrigation where coastal plains thrive while interior rain-fed areas suffer. Majority of people in Odisha still depends upon the agriculture and that is true and fine. But regional disparity रहुची जेमती किछि एरिया रे irrigation facility अच्छी like coastal plain जोटी rain-fed area like the western Odisha part जोटा कि हमरो जो रहिला okay this is the just what second this is our India map ठीक अछि ओके जस्ट गोटे सेकेंड हाँ एटा हमर इंडिया मैप रहिला तो ये जो ईस्टर्न घाट पार्ट रहिला ईस्टर्न घाट रो जो माने वेस्टर्न साइड रे रहले ईस्टर्न घाट जो माने वेस्टर्न साइड रे रहले सेटा तो रेनफेड एरिया सेट तो बहुत अधिक वर्ष होउनी तो सही जगह रे अधिक कोन दरकार इरिगेशन दरकार बट इरिगेशन इज नॉट प्रेजेंट देयर
सो सेठी एगेन जो माने चाष काम माने निजको और दे आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से मानकर इनकम वगैरह बहुत कम आसुछि दैट इंटेंसिफाई द spatial income inequality. Then targeted policy intervention to bridge the gap. State relies heavily on targeted regional planning. जेमती मुझे कहती कि तुम वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल होगा कि बिजु केबी के प्लान अलॉन्ग साइड हेवी इन्वेस्टमेंट इन स्टेट वाइड रोड कनेक्टिविटी डिजास्टर रेजिलियंस ये सब जिन कराऊँच सो दैट सबू एरिया जमी इक्वाली डेभलप्ड हो पारे. How to conclude? In conclusion, while Odisha made massive stride in overall GDP, आम GDP बहुत अधिक अच्छी. Even जति national GDP रो average अच्छी ताटू आम अधिक अच्छा. Around state रो एबे पाखापाखि 7 point और around 8.1 8.2 चलती है जेतले कि 7.4 पाखापाखि नेशन रो अच्छी national average अच्छी. Odisha has made massive stride in overall GDP growth and poverty alleviation. Obviously, poverty alleviation भी हमें बहुत काम हेची ओडिशा रे. Its regional development remains uneven. जेमति हम देखुछन ना हम कथा ले ऊपर केबी रीजन हे गला कोस्टल रीजन वर्सेस वेस्टर्न ओडिशा सदर्न ओडिशा हे गला. Balancing the growth of its thriving coastal cities with the inclusive development of its resource rich yet vulnerable interior hinterland remains the state's primary economic challenge. तांको कोस्टल स्टेट जोटा थ्राइव करछि ता सहित जोटा रिसोर्स रिच देखो वेस्टर्न ओडिशा रे बहुत सब जगह रे ऑलमोस्ट तुमको रिसोर्स मिल जाउछि से जो हमर अछि छोटा नागपुर प्लेट्यू ता पाखापाखि सब रीजन में हमर मिनरल्स अछि इवन कोरापुट रे भी मिनरल्स अछि दे आर रिसोर्स रिच बट vulnerable कारण से जगह से डेवलपमेंट हेइनी तो ओडिशा को केमति करिया पड़िबो ओडिशा रो प्लानिंग एमति होवा दरकार कि जो थ्राइविंग कोस्टल सिटी अच्छी ता सहित रिसोर्स रिच को लिंक करिकी स्टेट रो डेवलपमेंट को करिया को पड़िबो सो दैट कि इक्वली सब रीजन डेवलप्ड हे परिबे सेटा ही लिखिछि थ्राइविंग कोस्टल सिटीज with the inclusive of development of its resource rich yet vulnerable interior hinterlands remain the state's primary economic challenge. Fine. I'm asking question number 15. बढ़िया क्वेश्चन गोटे एटा India's caste system is paradoxical in nature. Characterize both staticity and fluidity. Discuss. देखो कास्ट सिस्टम आम जानते से पचार कौन पचार इंडिया जो कास्ट सिस्टम अच्छी दैट इज पैराडॉक्सिकल माने पैराडॉक्स जमी अच्छी ना गोटे स्टेटमेंट आ गोटे स्टेटमेंट को रंग बोली प्रूव कर एटा सत सेटा भूल एटा दुटा स्टेटमेंट अच्छी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 यदि स्टेटमेंट 1 ठीक हम ताले 2 भूल हम यदि 2 ठीक हम ताले 1 भूल हम दैट इज पैराडॉक्स तुम डिसाइड कर पारे कोटा ठीक कोटा भूल तो जो अपोजिट नेचर किसी जिनस आसो सेटा को आमको ये देखार अच्छी कि इंडिया रो कास्ट सिस्टम एबे भी स्टैटिसिटी अच्छी माने स्टैटिक नेचर अच्छी आ फ्लूइडिटी अच्छी बहुत अच्छी किसी जगह चेंज होउची किसी जगह चेंज होनी दैट थिंग वी नीड टू डिस्कस हियर. द इंडियन कास्ट सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स सोशियो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दैट प्रेजेंट्स ए फैसिनेटिंग पैराडॉक्स. वर्डिंग देखो इंडियन कास्ट सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स सोशियो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एतिकी जे तुम लिखिबो ताल तुमको मार्क मिलिबो. अगेन मु कहूची जोटी भी तुम जॉइन कर बट प्लीज प्लीज यू स्टार्ट राइटिंग मेन्स में मॉक लिख अदरवाइज ए वर्डिंग आसबनी आपर्यंत ए वर्डिंग आसबनी तुमको बहुत ही एवरेज मार्क मिलिबो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रैंक पे लिखा पड़ो. ओके द इंडियन कास्ट सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स socio religious institution that present a fascinating paradox. While its structural foundation appear deeply rigid and resistance to change, it has historically demonstrated a remarkable capacity to adapt, survive and morph into new forms. आमे एबे बर्तमान देखिबा दिटा जिंस आमे डिस्कशन करिबा हाउ इट इज स्टैटिक जो सी पचतला स्टैटिसिटी रिजिडिटी विषय आमे करिबा. सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट हाउ इट इज फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबिलिटी केमती अच्छी. फाइन आज यूजुअल यहाँ आम कि पॉइंट देती फॉर स्टैटिसिटी को प्रूव करने फास्ट इज अस्क्रिप्शन बाय बार्थ तुम जो कास्ट जन्म हो गल
तुमर कास्ट से ही रहिबो तुम लाइफ टाइम पे। देन परसिस्टेंट एंडोगामी, एंडोगामी माने मैरिज विद इन द सेम कास्ट, ठीक जहाँ भी कास्ट सिस्टम अच्छी सेम कास्ट रे मैरिज कले एंडोगामी कह जाए। आ एक्सोगामी माने डिफरेंट डिफरेंट कास्ट विच इंटर कास्ट मैरिज होची, राइट। थर्ड है रिचुअल हायरार्की एंड pollution, there is a concept of pure and pollution, okay। then systematic marginalization, ये चारटा जिनस को हमको ये डिस्कस करार अच्छी। फर्स्ट ला ascription by birth, an individual caste is permanently assigned by at birth, there is no social mechanism for an individual to legally or ritually change their caste identity during their lifetime। जोड़े गोटे कास्ट अच्छी से चाहूँ कि मुझे यही कास्ट रू अलग कास्ट को चेंज होबी, देयर इज नो मेकानिजम। जड़े जिते चेष्टा कले भी ता कास्ट सेम ही रोची, क्लास चेंज होची बट कास्ट विल बी रिमेन सेम। देन परसिस्टेंट एंडोगामी, द फंडामेंटल रूल ऑफ मैरिंग स्ट्रिक्टली विदिन one's own caste remains the strongest pillar of the system, preserving distinct genealogical and social boundary over generations। Then there are ritual hierarchy and pollution, the core concept of purity and pollution continue to dictate social distance। एबे भी बहुत जगह रे माने स्टिल न्यूज रे भी आछि गुड माने नॉट बहुत जगह रे किछि किछि जगह तो एबे भी स्टिल द प्रॉब्लम इज देयर। से माने तांग मन भीतर भाबि देछन कि वी आर प्योर, दे आर नॉट प्योर, दे आर पोल्यूटेड, फाइन। दैट इज शोन बाय सोशल डिस्टेंस। तांको घर गोटे जगह रे आ गोटे कास्ट घर आ गोटे जगह रे, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम। ट्रेडिशनल डाइनिंग रेस्ट्रिक्शन, से गोटे जगह बस खाइबानी आजिकली इवन टुडे ऑल्सो जिते इट इज नॉट प्रेजेंट इन सिटीज, सिटीज रे बहुत सारा डेवलपमेंट हो गलानी। इवन तुम आजिका डेट रे भी जदि रूरल ओडिशा जीव इंटीरियर तुम देख बहुत जगह एमती अच्छी कि देयर इज डिफरेंट और देयर इज द डाइनिंग सिस्टम और डाइनिंग प्लेसेस इज डिफरेंट। गोटे कास्ट लोक गोटे जगह खाइबे, आ गोटे कास्ट लोक आ गोटे जगह खाइबा दिया होची। एबे भी मिक्स डाइनिंग वाला सिस्टम किसी जगह आसीनी। देन रिलीजियस accessibility particularly in rural spheres, right। last systematic marginalization, despite legal protections the socio-economic vulnerability of historically disadvantaged group often persists structurally, maintaining a generational divide in wealth and resource ownership। because of this disadvantage और आम कहीपर हिस्टोरिकली इनजस्टिस, किसी लोक बहुत सारा वेल्थ अच्छी, किसी लोक वेल्थ ही नहीं, तो तांगु जिते रिजर्वेशन देले भी से जगह पहुंचे तो टाइम लगे ना। सो लीगल प्रोटेक्शन अच्छी बट स्टिल केते जण अवेयर अछंती लीगल प्रोटेक्शन विषय रे। इवन एमती बहुत सारा लोक अछंती आमे जो कहउछंती कि माने डिबेट चलची कि रिजर्वेशन ठीक रिजर्वेशन भूल। ये जो डिबेट होची किछि लोक जानि ना रिजर्वेशन तांग पय अछि कि नहीं, से जगह आमे केमती तांगु माने केमती तुम जस्टिफाई करबो एटा ठीक एटा भूल, दैट थिंग आल्सो प्रेजेंट स्टिल आज का डेट रे भी सब जिनस प्रेजेंट अच्छी। देन वी नीड टू शो सम एग्जांपल्स टू प्रूव दैट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कौन थला क्वेश्चन है द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक। आदरे हम चारटा पांचटा पॉइंट नहीं देखिबा। फर्स्ट ला संस्कृताइजेशन एंड पोजिशनल मोबिलिटी, सेकंड ला डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ऑक्युपेशनल डिकपलिंग, अर्बन anonymity and secular spaces, फाइन। संस्कृताइजेशन पोजिशनल मोबिलिटी जेमती एमएन श्रीनिवास कहते तांको नाटा माने डेफिनेटली तुम लिखो जो संस्कृताइजेशन लिखुच संस्कृताइजेशन द कॉइन इट वाज गिवन बाय एमएस श्रीनिवास, तो तांको नाटा सोशल माने जेतरा हम सोसाइटी विषय लिखुचंदी यदि कास्ट ऊपर लिखिबा कि संस्कृताइजेशन ऊपर लिखिबा ताले एमएस श्रीनिवास तुमको मेंशन करिया पड़ियो ही पड़ियो। जेमती एमएस श्रीनिवास ऑब्जर्व कले लोअर कास्ट कैन कलेक्टिवली एलिवेट देयर पोजीशन विद इन द लोकल हायरार्की ओवर टाइम बाय अडॉप्टिंग द कस्टम्स डायटरी हैबिट एंड रिचुअल डोमिनेंट कास्ट। संस्कृताइजेशन माने कोन जेमती माने गोटे अछि संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन, ओके। तो संस्कृताइजेशन माने जेमती हायर क्लास रो लोक जहाँ रिचुअल्स करती
जे तांको टे तळ लेवल रे थिबे कि क्लास रे थिबे ସେମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଯଦି ଡେଷ୍ଟିନେସନ ୱେଡିଂ କରୁଛି ତାଠୁ ଯିଏ ତଳ ଟିକେ ଅଛି ତା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବଟ୍ ତାଙ୍କଠୁ ତ କମ୍ ବି ଅଛି, ସିଏ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ଡେଷ୍ଟିନେସନ ୱେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଏଇଥିରେ ବି ଦ ସୋ କୋଲ୍ଡ ହାୟର କ୍ଲାସ ଦ ହାୟର କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ କାଷ୍ଟର ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଲୋୟର ଷ୍ଟାଟରେ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆଡପ୍ଟ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଅଫ ହାୟର କାଷ୍ଟ। ओके, सो कॉल्ड हायर कास्ट, आई एम नॉट सेइंग कि के हायर के लोअर, द सो कॉल्ड हायर कास्ट जो भी प्रैक्टिस अडॉप्ट करचंती सेही काम को जे तांकटू तळ कास्ट रे अछंती ସେମାନେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ। ଯେମିତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି କି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରେ ଯେମିତି ଖାଇବା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂ ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ ଦେ ଆଡପ୍ଟିଂ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ। ସିମିଲାରଲି ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ହେଲା हायर कास्ट लोक जितेबाला किसी करुँच कि प्राक्ट आपणई जदि से भाया तांकटू जे लोअर कास्ट अच्छा से कम कर दैट इज संस्कृताइजेशन। फाइन। तापर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। नाउ द कास्ट हैज इवॉल्व्ड इनटू ए हाईली डायनामिक पॉलिटिकल टूल। इवन ओडिशा तो कास्ट पॉलिटिक्स हुए नॉर्मली मे भी आगू हो पारे बट स्टिल एबे कास्ट पॉलिटिक्स हुए जी लेवल रे बिहार रे हरियाणा रे यूपी रे हुए जमी यादव वर्सेस ब्राह्मण अलग अलग कास्ट मानक जोटा हुए ओडिशा रे हुए बट देयर इज ए पॉलिटिक्स दैट इज बेस्ड और दे आर यूजिंग द कास्ट एज ए पॉलिटिकल टूल। मॉडर्न कास्ट ग्रुप from fluid coalition, pressure groups, and vote banks to actively contest elections and demand state benefits. Okay, modern caste groups form fluid coalitions depending upon their interest and benefits, pressure groups and vote banks से vote bank हिसाब से भी काम करती to actively contest election भी से contest करती and demand state benefit to their caste. Fine, that is democratic political mobilization. थर्ड है ऑक्युपेशनल डिकपलिंग। जमीती आगुरी थिला कि ब्राह्मण माने आइदर पूजा करिवे किंबा पाठ पढ़ारे एंगेज हेबे, क्षत्रिय मान थिला कि से आइदर चाषबास करिवे नले युद्ध रे जिवे। फाइन, तो अलग अलग कास्ट अलग अलग एक्टिविटी थिला बट नाउ बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ सेक्युलर एजुकेशन and market economies, the traditional link between the caste and occupation is broken, allowing individual to pursue diverse professional path. एबे जी जो कास्ट रही था यदि तांको आउ किछि करियर अछि दे कैन गिव द एग्जाम, दे कैन आल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन एंड डू द प्रोफेशन व्हिच दे वांट टू डू। एतरे किछि रेस्ट्रिक्शन नाही। देन लास्ट इज अर्बन एनोनिमिटी एंड सेक्युलर स्पेसेस। Urbanization provides a landscape of relatively anonymity। जो बहुत अर्बन आम कौन माने हुए कि सेठी माने दैट इज द गुड थिंग कि दैट प्रोवाइड रिलेटिवली एनोनिमिटी। अर्बन जे तुम रूरल को पळे आसो रूरल कौन हम मोस्टली तुमको कहीं चिन्हती, तुम बापा ना तुमको चिन्हे कि जेजे बापा ना तुमको चिन्हे तो कौन आसो अच्छा तार एतिक वेल्थ अच्छी अनुसार आम कौन कर अनुसार ट्रीट करिया। बट दैट एनोनिमिटी इज प्रेजेंट इन अर्बन जोटी कि ऑलमोस्ट समस्त को इक्वाली ट्रीटमेंट करा जाए, whether it is in workplace, public transport, modern spaces, traditional caste based interactions and restriction become heavily diluted। तुम जदि मो बस रे जीव तुम जो कास्ट रही था वोमेन मान को टिके कंसेशन अच्छी आउ से जो माने जेकोसी कास्ट हो किसी ना कि यही कास्ट लोक ही बेनिफिट मिले से समस्त को बेनिफिट मिलूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, मॉडर्न स्पेस होगा, लाइब्रेरी तुम गल लाइब्रेरी को बेसिस तुमको देवे कि जॉब होगा तो को बेसिस तुमको मिलूँ, तुम मेरिट बेसिस मिलूँ से तो माने से तो एमती ना कि कास्ट बेसिस सब जिन हो। फाइन, रिजर्वेशन इज डिफरेंट। रिजर्वेशन कथा मुझे कहूनी तुम एग्जांपल नहीं जाओ ना जमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तुम मो बस जाऊँ मो बस तुम जी टिकेट अन्य लोक टिकेट से तो पचार तुम कास्ट कौन अच्छी। सो दैट dilute the caste based
system जोटा के fluid करछन, which is a very good thing that is happening in urban spaces. So we can conclude that the caste system survives precisely due to this paradox. While staticity protects its structural core, its fluidity provides functional resilience required to morph and integrate into modern democratic, economic and secular frameworks. So এই তিনটা জিনিস তুমি যদি বুঝিথিব তাহলে আরামরে চার চারটা পয়েন্ট লিখিদেব and that is sufficient to answer এটা কেতে মার্ক কোশ্চেন ଥିଲା এটা 15 নম্বর না 15 নম্বর মানে 300 ওয়ার্ডর 20 মার্কর কোশ্চেন রাইট লাস্ট কোশ্চেন এটা okay the good news I will tell after this question discussion assess the major development in final phase of national movement and explain why independence become unavoidable by 1947 the final phase of modern India movement जोटा कि 1942 रो स्टार्ट है 1947 पर्यंत चलला that witnessed an unprecedented escalation of popular resistance coupled with rapid decline in British administrative control दुटा जिन होता गोटे पपुलर रेजिस्टेंस थिला लोक माने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करथिले रेजिस्ट करथिले ब्रिटिश मानकू आ ब्रिटिश माने जेहेतु इकोनॉमिक से मानकर सेटल हो जाइतला बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार then the combination of domestic rebellion global geopolitics shifts जेमती इवन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2 से माने चाहूतले कि इंडिया वाला इंग्लैंड को सहायता करंतु तो से माने इंग्लैंड रो जो माने अलाई थिले दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन इंग्लैंड कि तुम इंडिया रो माने इंडिया रो सपोर्ट आने पड़ियो so they are trying to get the support of Indians so that is the geopolitical shift that led the British rule in India reached its breaking point तो ए सब जिंस पई हेला ठीक अछि तो बहुत सारा जिंस कल्मिनेट हे कि फाइनली इंडिपेंडेंस मिलिथिला the major development and the factors that making independence unavoidable I'm going to करी discussion करिवा the first one is quit India movement 1942 second la Indian National Army INA then the INA trial then RIN mutiny Royal Indian Navy तार mutiny हेतला then post world war British रो जो economic problem आस्तिला then unprecedented communal polarization direct action day वगैरह जो थिला failure of constitutional missions क्रिप्स मिशन आसला वेबल मिशन आसला फेल हो गला देन द माउंटबेटन प्लान एंड आटलिस्ट डिक्लेरेशन ये 8टा पॉइंट को हमको गोटे गोटे करके डिस्कशन करियार अछि फर्स्ट ला क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी with a slogan do or die करो किंबा मरो this movement transformed into a massive decentralized mass uprising इंडिया सब जगह रे ए uprising स्टार्ट हेतला it proved that the British could no longer rule India without relying on sheer unsustainable military force. Second, the Indian National Army led by Subhash Chandra Bose, I mean Subhash Chandra Bose INA को lead करथिले the INA's military campaign against British heavily weakened the colonial state authority. The military campaign with the Japan से तो मिसिक्स मान आस्थिले जापान धोखा देले so that is a different story but INA रो जो कैंपेन थिला अगेंस्ट ब्रिटिश दैट weakened the colonies state authority सेटा को weaken करथिला then INA trial and public upsurge INA trial रे तीन जण लोकଙ୍କୁ ट्रायल कराइतला तांको पब्लिकली हैंग करा गला जण थिले गुरुबख्श सिंह ढिल्लो जण थिले सेहनवाज आउ थिले प्रेम कुमार सहगल जणे हिंदू जणे मुस्लिम जणे सिख तो सेमानंकु जेतबेले पब्लिकली हैंग करा गला देन there is public upsurge लोक मान भीतर उत्तेजना स्टार्ट हला राइट द पब्लिक ट्रायल ऑफ INA prisoners at Red Fort triggered massive pan India protest cutting across religious and regional lines समस्ते धर्म आउ रीजन ताकू छाड़ी की ऊपर को उठी की प्रोटेस्ट कले एंड इंटेंसिफाई एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स तापरे हला रॉयल Indian Navy RIN mutiny 1946 the revolt by rating of Royal Indian Navy in Bombay alongside strikes in Royal Indian Air Force okay दिन मिसिकी माने RIN स्टार्ट हला Air Force से भी स्टार्ट हला that signal the British could no longer rely on absolute
loyalty on Indian armed forces, the ultimate bedrock of colonial power। ଦେଖ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ କେମିତି ଜଣେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର 10 ଜଣ ସୈନିକ, ଇଣ୍ଡିଆରେ 1000 ଜଣ ସୈନିକ, ଠିକ୍, ତାଙ୍କର 10, ଇଣ୍ଡିଆର 1000, ତ ଏଇ 1000କୁ ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ରୁଲ୍ କଲେ। ପଢ଼ିଥିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ପଢ଼ିଥିବ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି କନେକ୍ଟ ଥିଲା। ଦେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ 2 ବ୍ରିଟିଶ, ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ 2 ସରିଗଲା, ବ୍ରିଟିଶର ଇକୋନୋମି ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସ୍ୟାଟର୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଇକୋନୋମି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଖତମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ଜଷ୍ଟେଡ୍, ଏତେ ଲମ୍ବା ୱାର୍ ଲଢ଼ିଲା ପରେ ମିଲିଟାରୀ ପାଖରେ ଆଉ କୋଉଠି ପାୱାର ଥିବ କି ସେମାନେ ଏଗେନ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଡୁ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଦ ନ୍ୟୁଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲେବର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଲେବର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଆସିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିଡ୍ ବାय କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଆଟଲି, ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦ ମେଣ୍ଟେନିଂ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଜ୍ ଏ କଲୋନି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା would be very ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ହିଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ତ ସେ ଚାହିଁଲେ କି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇକି ପଳେଇବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ୍ କମ୍ୟୁନାଲ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍, ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା କଲମିନେଟିଂ ଦ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ରେ ଇନ୍ 1946, ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରାୟଟ୍ସ ହେଇଗଲା। After that, subsequent communal riots created an administrative gridlock। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିକି ତାକୁ ପାୱାର ଦେଇଦେଇକି ସେମାନେ ଏଠୁ ପଳେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦେନ୍ ଫେଲ୍ୟୁର ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମିଶନ୍ସ, କେତେ ସାରା ମିଶନ ଆସିଲା, କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ୱାଭେଲ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ କେମ୍ସ ଦ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ that proved that the political deadlock between the Congress and the Muslim League could only be resolved by complete transfer of power and partition। जोटा माउंटबेटन प्लान नहीं आसला। लास्ट थिंग इज द माउंटबेटन प्लान एंड आटलिस्ट डिक्लेरेशन। आटली डिक्लेयर कले कि 1947 जो डेट देले कि यही डेट पूर्व आम पलैबू, आम भारत छाड़देबू। तापर माउंटबेटन जे आसते भाइसरय होइकी सी गोटे प्लान कले, दैट इज नोन एज जून 3 माउंटबेटन प्लान। ओके, माने जून रे आसला 3 माउंटबेटन प्लान, फॉर्मलाइज द इनएविटेबल रैपिड लिक्विडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, दुटा पार्ट करके डिवाइड करदेले, क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया तो थिला ऑब्वियसली, पाकिस्तान क्रिएशन हला। देन कंक्लूजन कौन लिखा आम, इंडिपेंडेंस बाय 1947 became completely unavoidable due to intersection of intense nationalist militancy, the collapse of colonial enforcement machinery and severe post-war British exhaustion, culminating the birth of a sovereign India। देखो जिनस कौन है, तुम जब क्वेश्चन को भल देख, जी आम क्वेश्चन कले 17-18 क्वेश्चन कले, देयर इज ए हिडन पैटर्न। एंड इफ यू नो द पैटर्न, जे तुम पैटर्न को ठीक बुझी पार, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम विथ इज। तार गोटे पैटर्न अच्छी। ओके, आई एम नॉट सेइंग बाय सीइंग दिस क्वेश्चन ओनली, ये क्वेश्चन में देखिली OCS 2025 प्रिलिम्स भी पैटर्न गोटे देख, देयर इज ए क्लियर कट पैटर्न। एंड इफ यू ऑब्जर्व that question and observe this 2024 मेंस क्वेश्चन, तुमको गोटे पैटर्न देखा दियो। दैट मीन देयर इज शिफ्ट, जोटा आगु ओपीएससी पचारला, ओपीएससी तार अप्रोच शिफ्ट करछि। ओके, ऑब्वियसली मार्क तो जहाँ आसला दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर एवरीवन, बट ओपीएससी तार अप्रोच शिफ्ट करछि। जितरा अप्रोच शिफ्ट करछि से अप्रोच को हम बुझिया पड़ियो। जमी आगु बहुत सारा क्वेश्चन आसला, गोटे क्वेश्चन तो गांधी ऊपर थिला ही थिला, फाइन, बट तुम 2025 क्वेश्चन देख लो, जो क्वेश्चन पचार ए गांधी एत रोल, माने गांधी रोल ऑब्वियसली अच्छी, नो डाउट नहीं, बट आगु क्वेश्चन आसला जो गांधी ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन थिला, बट नाउ दे हैव शिफ्टेड। ओके, एटा ला फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है जो लीडर मानू वेटेज मिलू नथिला, नाउ सम लीडर्स वर गेटिंग दैट प्रोमिनेंट स्पेस। श्याम प्रसाद मुखर्जी को तुम देख, श्याम प्रसाद मुखर्जी वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ, जितेबाला 1956 पाखापाखि जितेबाला कौन से मिनिस्टर भी थे श्याम प्रसाद मुखर्जी, बट एग्जाम में एत प्रोमिनेंट रोल में पचार जाऊला कि डायरेक्ट क्वेश्चन आसूला, बट नाउ
प्रोमिनेंट लीडर हिसाब से क्वेश्चन आसा स्टार्ट हो गलानी फाइन से गोटे जिनस केवल आम गांधी पढ़ीदे हेनी अन्य जो प्रोमिनेंट लीडर थे भी आमको देखा पड़ो दैट इज ए शिफ्ट इन पैटर्न आउ गोटे पैटर्न चेंज कौन ओडिशा फोकस इन ओडिशा जो मैंने यूपीएससी दौरान दैट्स फाइन कि तुम इंडिया तो पढ़ुच बट पर्टिकुलरली तुमको एवं ओडिशा सेक्शन को तुम छाड़ी जीव दैट विल एक्ट एज ए बुमरैंग एंड यू विल नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम तुम जीएस 1 देख जदि ओडिशार 150 मार्क क्वेश्चन से पचार तुम पढ़ीना 100 मार्क आंसर देके आसो तुम 60 70 65 55 रखियो केमी तुम क्वालिफाई कर एग्जाम जोटा ओडिशा विषय थिला से माने स्पेसिफिकली ओडिशा पर पचार आ गोटे जिनस चेंज होती जीएस 2 रे जो इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट थिला एत से पचार नथिले ता माने नुह कि से माने बॉर्डर डिस्प्यूट पचारे पचारे बट से माने कौन करचंती से माने गोटे गोटे थर गोटे गोटे टॉपिक ऊपर हाईली फोकस करचंती पर्टिकुलरली जीएस 2 2022 रे तुम देखियो 2022 रे क्वेश्चन थिला गवर्नेंस रो 2023 रे क्वेश्चन सब आड़ मिक्स होके आसला 2024 रे इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट छाड़ी अलग क्वेश्चन से पचारिकी पूरे देले भितर तो से माने कौन करचंती गोटे गोटे एरिया को धरचंती आ से एरिया रे बहुत सारा क्वेश्चन पचारचंती तुम जो भाग्य भल थो तुम से एरिया पढ़ी जाइथिबो ताले बहुत सारा क्वेश्चन करके आसियो बट देयर इज ए अगेन देयर इज सम चैलेंज कि तुम कौन पार्ट छाड़ी जाई परियोनी कोई ठीक अच्छी एति पार्ट रो 25 मार्क पढ़ुछु मोटा छाड़ दे गले भी मु 225 मार्क रो आंसर लिखि दे आसिबो नो तुम जानना तुम जोटा 25 मार्क भाबी जाउछु सेतु मे बी 70 मार्क पचा देबे एंड यू नो द रिजल्ट दीज आर द nuances of exam which changed तो आम अप्रोच को भी सेमती चेंज करा पड़ो एंड लास्टली द क्वेश्चन लेवल इज मोर डायनामिक आर किसी डायनामिक क्वेश्चन पचार किसी डायरेक्टली तुम करंट अफेयर आसला लाइक आर्टिकल 142 एसआईआर एथर आई एम एक्सपेक्टिंग मोर क्वेश्चंस लाइक दिस डायनामिक भी हम करंट अफेयर बिल्कुल क्वेश्चन आसो सो से सब जिन को तुम छाड़ी गले दैट विल क्रिएट माने तुमको से रैंक पाया दैट विल क्रिएट हिंड्रेंस ये सब जिन फोकस करके आमको प्रिपेयर करिया पड़ो ओके सो दिस वीडियो इज गेटिंग क्वाइट लॉन्ग सो नेक्स्ट वीडियो हम कथा हाउ टू सॉल्व ऑल दिस तो हमरो एबे गोटे मेंस टेस्ट सीरीज तो चलची आज यू नो मेंस रो आमे जीएस हमर एसए कंप्लीट हो जाई ठीक है एसए कंप्लीट हो जाई तार मटेरियल भी हम दे दीचु एसए इज कंप्लीट तापरे जीएस 2 रो पॉलिटी दीटा सरी पॉलिटी 1 कंप्लीट पॉलिटी 2 कंप्लीट एबे हमर गवर्नेंस चलची जीएस 2 सरला परे हम जीएस 4 को आसीबु देन जीएस 3 एंड फाइनली वी विल मूव टू जीएस 1 ठीक दिस इज द स्ट्रक्चर ता सहित आम गोटे जो मैंने वर्किंग एस्पिरेंट अच्छा गोटे बैच स्टार्ट कर वर्किंग एस्पिरेंट गोटे बैच स्टार्ट होती दैट बैच विल स्टार्टिंग फ्रॉम 5 जुलाई काली टू स्टार्ट हम राति 10टा रु लाइव क्लासेस रहिबो राति 10 रु 12टा पर्यंत लाइव क्लासेस विल बी देयर लाइव एंड रिकॉर्डिंग बोथ क्लासेस आर अवेलेबल तुम से 16 फुल लेंथ टेस्ट फुल मटेरियल ओके अब एबे बोधे आम पाखे आ 3टा खंड सीट रहा लास्ट 10टा जो आम फास्ट 10टा सीट देथिलु तादर 3टा अच्छी द कॉस्ट इज 5000 फॉर देम 3टा सीट में 5000 रहिबो तापर जो माने आसीबे द कॉस्ट विल बी 6000 रुपीस फॉर ऑल ऑफ देम जो माने 10 पर जॉइन करिवे okay so this is a small information that I want to share thanks for watching the lecture have a great day